Hello, hey guys, what's up? My name is Rahul and welcome to the new channel Ramsey. For the next 100 days, I'll be uploading one video on a daily basis. It can be a short video of like 1, 2, 3 minutes, or it can be a long video of like 30 minutes, 45 minutes. But I will try to upload at least one video on a daily basis. अभी फ़िलहाल के लिए जो वीडियोस अपलोड होंगी the quality is not going to be very good because like I have not made a setup for the videos. I just want to start, right? This is just a challenge that I'm giving myself, right? Like instead of waiting for perfection कि जब मेरे पास सारे equipments आएंगे, जब मेरे पास एक proper editing team आएगी, when I have everything, I can't wait that long to start a video, right? I don't want to wait for that long. So I want to take this channel off and I want to introduce this channel. So what is Ramsey? Ramsey stands for Rational Marketing, right? You can also call this behavioral marketing. You can also call this neuro marketing, or you can also call this psycho marketing. Like there is one more word, but it's a little bit tacky, right? You can call this mental marketing. But a lot of these words सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार आई एम ट्राइंग टू मार्केट asylum, I'm trying to market a pagal khana, but that is not the case. Let me explain what I do here and what this channel is going to be about. The first thing is, जब हम मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि चलो भाई एड्स रन करते हैं, राइट? एड्स रन करते हैं गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है, राइट? बट दिस इज़ नॉट मार्केटिंग. व्हाट इज़ मार्केटिंग? Marketing is creating psychological value, right? For example, let's say cigarettes, right? Cigarettes are one of the best marketed products ever, right? Also, the product is also very addictive. Cigarette as a product is very addictive, but the marketing is crazy, right? But objectively, it's not a very good product. The same thing with, let's say, eating burgers and eating deep fried things like KFC, eating French fries, all of these things. These things are not good products, but they have been marketed very well, right? Because of this, people like them. Because of this, like they are very famous, they are popular. So a lot of times, a product may or may not have enough objective value, but with the help of good marketing, the product can reach heights. Like the product can be very great, right? So सबसे पहले हम मार्केटिंग में क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट का जो परसेप्शन है, राइट, जिस नज़रिए से लोग, जिस पर्सपेक्टिव से लोग उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हम उस पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, राइट? मार्केटिंग इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग, अंडरस्टैंड दैट. एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि मैं अपने पैसे लगा के अपने ब्रांड का नाम या अपना ऑफ़र या अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, राइट? अब मैं एडवर्टाइज़ कैसे भी कर सकता हूँ. मैं रोड्स पे पैम्पलेट्स या फ्लायर्स दे सकता हूँ लोगों को. मैं अपने एरिया में या अपने लाइक स्ट्रीट्स पे मैं अपने बैनर चिपका सकता हूँ, राइट? I can pay a newspaper or a magazine to run my ad or run my service. I can pay a television, right, or a channel or a broadcast, like for example KBC, right? I can like for example Sony Entertainments or Aaj Tak. I can pay these channels to run my ads. Another thing I can do is I can go on digital. I can promote my brand on YouTube. I can run YouTube ads, I can run Google ads, I can run display ads, I can run programmatic ads, I can run social media ads on Facebook, I can run like Facebook and Instagram story ads, I can run email campaigns. That is also a form of advertisement, but that is much more very highly targeted advertisement, right? Like तुम random लोगों के email तक नहीं पहुंच पाओगे. You will have to gather emails of people, right? So emailing is also an advertisement, but it's much more intimate kind of advertisement, much more high performing kind of advertisement.
बट नन ऑफ दीज थिंग्स आर मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के का एक पार्ट है, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं है, राइट। एंड दिस इज़ वेयर a lot of small brands, a lot of startups, a lot of family businesses, like a lot of small to medium sized brands, they get confused. They should be focused on marketing, but they get lost in advertising. वो पैसा लगाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और they think that यार why is not working, right? For example, let me give you an idea. Let me give you an understanding of why, if you do not understand what marketing is, what advertising is, and what promotion is, right? What sales is, what branding is, you will not be able to be successful. Your brand is not going to be successful. Okay? So here is the first piece of the puzzle. Let's say, like, let's go back 20 years, right? जब YouTube एकदम नया आया था मार्केट में, उस समय किसी को पता नहीं था YouTube नाम की चीज़ होती है, राइट। धीरे धीरे YouTube बढ़ना चालू हुआ, राइट। तो YouTube पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत सारे नए क्रिएटर्स आ रहे थे YouTube पे। पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट आइडियाज़, पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट विजन्स ऑन YouTube, राइट। तो जिन ब्रांड्स ने सबसे पहले YouTube पे रन ऐड किया, उनको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिले, उनको क्रेजी रिजल्ट्स मिले, राइट। फॉर एग्जांपल, जब शुरू में इंटरनेट मार्केटिंग आया था, राइट, व्हेन इनिशियली पीपल स्टार्टेड मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट लाइक नॉर्मल बैनर एडवर्टाइजमेंट्स, तो IBM ने एक ऐड रन किया था। उस ऐड का क्लिक थ्रू रेट CTR, जिन लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 78%, विच इज़ अ क्रेजी हाई नंबर, राइट। सो सबसे पहले चीज़ समझने की ये है कि मार्केटिंग में जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ हमेशा काम करती है, राइट। सो अब क्या हो गया कि अब हर किसी के पास एक इंस्टाग्राम पेज है, अब हर किसी के पास एक फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, लिंक्डइन पेज है। तो अगर तुम्हारे पास भी सेम चीज़ है, अगर और दूसरे बिजनेस के पास भी सेम चीज़ है, सो भाई मैं तुम्हारे साथ बिजनेस क्यों करूँ? वाई शुड आई वर्क विथ यू, राइट? देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी, लाइक देन आई एम गोइंग टू चूज़ अ बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइसिंग, जिसका प्राइस कम होगा, जो मेरे घर से ज़्यादा नज़दीक होगा, जो मेरी भाषा बोलता होगा, जो मेरे जैसा होगा एज अ नॉर्मल कंज्यूमर साइकोलॉजी, राइट। मैं इस बंदे के पास जाके अपना पैसा दूंगा, मैं इस बंदे के साथ बिजनेस करूंगा बिकॉज आई ट्रस्ट दैट गाय, राइट। आई लाइक दैट गाय एंड ट्रस्ट दैट गाय, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट। मैं एक जिम में जाता हूँ, इफ़ आई लाइक द ओनर ऑफ द जिम, इफ़ आई लाइक द ट्रेनर्स ऑफ द जिम, right, and I trust them, I'm going to go, I'm going to keep going there regardless, right, unless and until मेरे को एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि लाइक 10 times 20 times ज़्यादा अच्छा है मेरे like the current gym that I'm going to. The same thing with where I buy my clothes from, where I shop from, right. So most of my shopping I do from Myntra, बट अजियो नॉट दैट मच। वाई? बिकॉज अभी तक ना मैं अजियो को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मिंत्रा पे मेरे को अच्छे प्रोडक्ट्स मिले अच्छे प्राइस पे, मेरे को अच्छे ब्रांड्स मिले अच्छे प्राइस पे, राइट। एंड जनरली मिंत्रा हैज़ गिवन मी अ डिसेंट गुड इनफ सर्विस, जो कि अभी तक मेरे को अजियो से नहीं मिल पाई है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू सो। ट्रस्ट एंड लाइकिंग, राइट। आई लाइक द ब्रांड, आई लाइक द पीपल एसोसिएटेड विद द ब्रांड। Like for example, I like Hrithik Roshan, and Hrithik Roshan is directly associated. Hrithik Roshan used to be a childhood icon of mine, right? And Hrithik Roshan is very closely associated with Myntra brand. And another thing is I trust them. So these two things are far more important in marketing than social media advertising. Like मान लो तुम एक social media campaign रन भी कर रहे हो, right? तुम एक Google campaign रन भी कर रहे हो और वो बहुत एवरेज रिजल्ट दे रहा है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज करोगे? लाइक लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं चेंज करने का? लोग सोचते हैं कि यार चल लेट मी चेंज द कैप्शन लिटिल बिट, ठीक है, दैट इज़ अ गुड दैट्स अ गुड थॉट। फिर लोग क्या सोचते हैं कि यार
मे बी मेरी टारगेटिंग सही अच्छी नहीं है. आई एम लाइक नो ब्रो, लाइक टारगेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा टारगेटिंग से. Like obviously you are going to see like 3, 4, 5% improved if you really improve your targeting. But यहाँ पे एक the law of diminishing return आता है. So law of diminishing return एक concept है, वो समझो कि हम एक टेक्निक को जब यूज़ करते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है हमें, शुरू में बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी, बहुत लाइक शुरू में इट्स वेरी पावरफुल, शुरू में इट्स वेरी इम्पैक्टफुल. बट एज टाइम गोज ऑन एंड एज वी कीप यूजिंग द सेम टेक्निक अगेन एंड अगेन टू गेट दैट सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट धीरे धीरे कम होने लगता है. ओके, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइंड आउट न्यू एरियाज ऑफ एक्सपेंशन, राइट. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं टारगेटिंग ज़्यादा सही कैसे करूँ, और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं कौन से हैशटैग्स यूज़ करूँ, जो कि फॉर अ कंज्यूमर इट डज नॉट मीन एनी थिंग, राइट. इट विल लिटरली मेक ज़ीरो डिफरेंस इन योर मार्केटिंग इफ़ यू चेंज योर हैशटैग्स, इफ़ यू चेंज योर लाइक मे बी in 10,000 businesses, one business is going to get successful in that, and that's going to be complete luck, right. इसमें तुम्हारा कुछ हाथ नहीं है. So understanding this is very important. So instead of changing that, why don't you do something else, and why don't you change the way you are communicating your product, right? Because a lot of the times value is created in my mind. A lot of times value is created socially, value is created culturally, value is created, you can say, almost psychologically. Like almost there is something called as obviously there is something called as logical value. एक ऑब्जेक्टिव लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, या बट और भी बहुत अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, राइट. सो a lot of people focus on logical, like logical side of the marketing. Like अच्छा मेरे मैं 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे, मेरे को ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, सो चलो मैं 15,000 रुपये खर्च करता हूँ, राइट. और मैं अपने टारगेटिंग में, अपने हैशटैग्स में कुछ चेंज करता हूँ, राइट. या मैं कुछ और नई टेक्निक ढूंढता हूँ एडवर्टाइज करने की. नहीं, इट्स नॉट द टेक्निक दैट इज़ बैड, it is not the targeting that is not getting the results. It's just that you do not understand your target market very well, and जो तुम्हारे product का placement है, positioning है, framing है, that is not done very well. So once you do this, even if you have average or less than perfect targeting, even if you are not using the exact the most highly rated hashtags, your advertisements are still going to perform very well. So advertising is a part of marketing, so is sales. Sales is also a part of marketing, but marketing as a whole is much different. I think marketing as a whole is simply the problem solving of a business. I think that is marketing. How are you creatively solving your business problems, right? How are you attracting more clients? How are you delighting those clients? How are you getting those clients to stay with you for a very long time? How are you making sure that those clients tell their friends and their family about you, and they become a brand ambassadors, right? How do you reach or achieve explosive growth in your marketing? These are some important questions to ask as a marketer, and this is where you should start. Instead of starting at the very high level, you should go back down. You should, like, instead of thinking forwards, do backwards thinking, right? Do backwards thinking. Like, okay, marketing से नीचे आओ थोड़ा, sales पे काम करो. Is your sales pitch right? What are you trying to sell? Try to understand yourself. What you're trying to sell? What am I trying to do here? What is the benefit? What is the value I'm providing? What is the logical value I'm providing to the customer? What is the emotional value I'm providing to the customer? What is the experiential value I'm providing to the customer? How am I framing my product? How am I positioning my product? How are customers perceiving my product or service or my business, right? What is the narrative in which I am placing my product? What is the narrative behind or around my product?
right? Is this product in demand, right? Can this product be associated with something else? Can I show tangible value visually of the product, right? So go down, go down, go down, then come at like your business, like why am I selling this product, why am I selling this service? So start from the very basics, start from your business level, start from your shop, start from your like the initial business plan, the initial business marketing plan that you had. Start from there and then slowly build things up. Thank you for watching. Subscribe for more. Like if you want to know more about what is behavioral marketing, what is the psychology behind marketing, how can you use human behavior, how can you use our psychological biases and the way we think, the way we make decisions to market your product and services, subscribe to the channel. You can also follow me on Instagram and you can also follow me on LinkedIn, right? All the links are going to be in the description below. Share this video with other people or other businesses, or maybe your boss, maybe like people who are handling your marketing, and I'm gonna see you in another video.